Hi everyone and welcome to Butterfly Learnings podcast. Today we have Dhara Shah Bangera with us, who is a clinical neuropsychologist. She works with MRR and Bhakti Vedanta Hospital and is the founder of Neve Child Learning Center and runs her own NGO called as Samaisha Foundation. Over to you, Dhara. Hello, thank you so much for having me over. Hi Dhara, welcome to Butterfly Learnings podcast. Hi Kushi, great to be here. How are you? I'm good. How are you? आई एम ऑल गुड. आप हमारे पेरेंट्स को प्लीज़ बताना चाहेंगे कि आपने ये जर्नी कैसे कब शुरू की और मतलब क्या सोचा कि आपको स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ आगे बढ़ना है इन करियर. Okay. My interest was always in the brain. Like मुझे वो समझने में बहुत इंटरेस्ट था कि हाउ डज़ द ब्रेन वर्क, ब्रेन का फंक्शनिंग कैसे चलता है एंड द न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन वेर इन कोई भी इंजरी हुआ कुछ भी डीले है व्हेन यू वर्क विद द ब्रेन स्टार्ट्स रीडेवलपिंग ऑन इट्स ओन. So I started at KM Hospital initially, where my work was mainly with adults. But over a period of time, what I understood is there is a lot of scope of improvement which is there in children, provided वो right time पे diagnose किए जाते हैं और उनको therapies दी जाती है. So that's when I joined Jaslok, and then the journey began from there, which was more of peds, with autism, ADHD, learning disability, and intellectual disability, cerebral palsy, and all of it. So that's how I became a neuropsychologist working for children. ओह दैट्स ग्रेट. सो क्या बच्चों के एज ग्रुप है जहाँ से आप मतलब स्टार्टिंग एज ग्रुप बच्चों की जो आप ट्रीट करते हैं? I have seen children as small as 18 months. Thanks to the digital era, we have children getting diagnosed at probably 18 months. Oh. And the eldest, to say so, they are children. But like in my school, which I run, Neve, I have the eldest kid who's 33 years old. Okay, so physically, obviously, उसका body पूरा grow हो गया है, but mentally he is still somewhere between 10 to 12 years of age, and we are working to make him more independent. That's So there is a huge age range considering the diagnosis and the therapy interventions. So, what methods or techniques do you use in your practice to make these children work? Like, So when we work with the children, Kushi, there are different aspects. Okay, the first, there are never parents who are going to come and tell you Yeah. कि अरे मेरे बच्चे को ADHD है, अरे मेरे बच्चे को autism है. It's always like अरे ये बैठता नहीं है, अरे मैं बुलाती हूँ तो जवाब नहीं देता है, बट फ़ोन बजता है तो उसको समझ में आता है कि फ़ोन बज रहा है करके. So the first and the most crucial part is the diagnosis of why the child is behaving in a particular way, and after that is obviously the interventions, Yeah. which we continue with them. So I wouldn't say there is a single approach जो ये बच्चों के साथ काम करता है. It's more of an eclectic approach where multiple therapies, when they come together, and most importantly the parents working with the therapist, there is a huge improvement that we see in the child. दैट्स ग्रेट. सो ऐसा होता है कि कोई पेरेंट को इसके बारे में पता ही नहीं है एंड दे आर लाइक वो बस रोता है या बोलता ही नहीं है. सो देन हाउ डू यू से पेरेंट्स की आपको इसको डायग्नोस करवाना पड़ेगा एंड ये शायद ऑटिस्टिक या ADHD के रडार पे होगा? Okay. So see, there are 3-4 things to it. Number one, when they come, okay, so when I start taking the history, तो मैं इनिशियली पेरेंट्स को अराउंड 10-15 मिनट्स बात करने देती हूँ. देन ग्रेजुअली आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज आई गेट एन आइडिया बाई सीइंग द चाइल्ड कि अरे हाँ ये तो ऑटिज्म दिख रहा है या तो ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डीले है. ओके, तो व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस जो पेरेंट्स को फिर लगता है अरे ये तो बच्चे को 10 मिनट में समझ गए, then that trust starts coming on me, कि अच्छा हाँ ये समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ. So for example, if they come and tell me, कि मैम ये बोलता नहीं है, okay, so I am still observing the child in the OPD. That is why there are a lot of people who run with the appointments कि अरे मैडम देख लो 5 मिनट में देख के हो जाएगा. But that never works, with a neurologist, with a psychologist, we need at least 20-25 minutes with the child.
So my later questions go on to that ये बात करता है क्या, आप बुलाते हो तो देखता है क्या, खाना अच्छे से खाता है, च्यूइंग करता है क्या, और डज ही अलाव अ हेड बात, और अगर आप बच्चों के बीच में छोड़ते हो तो ये बच्चों के साथ खेलता है कि अकेला रहता है. So when I start asking these questions, somewhere that trust starts building up. That अरे हाँ इनको समझ में आ रहा है कि मेरे बच्चे को exactly क्या हो रहा है, and then they are happier to go ahead with the diagnosis and things. And I think counseling plays a major role here, because when I diagnose a child, they feel it is the end of the world कि autism है तो ये special school में ही जाएगा, normal school में They नहीं कर get पाएगा. scared. Yes, it is very scary, Yeah. right? If like even I don't know what is going to happen Yeah. futuristically with the child. So being there for the parent, listening to the parent, I think that is very, very important, because they are the ones who are going to go back and work. So we need to give them that strength, wo taakat, yeah, empower them. That is, I think, very important. So once the child is diagnosed, after plans क्या होते हैं कि उसको कौन सी थेरेपी देनी चाहिए या कौन सी थेरेपी उसके लिए सूटेबल है? Okay, so there are a lot of places जहाँ पे therapy starts without diagnosis. So I will just highlight कि diagnosis क्यों important होता है. When I am doing an assessment, I am looking at development, behavior में autism कितना है, hyperactivity कितना है, stubbornness कितना है. So ये जो elevations या कौन सा ज़्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिजिडिटी ज़्यादा आ रहा है, ऑटिज्म सीवियर आ रहा है, ओके, एंड डेवलपमेंटल डिले ज़्यादा आ रहा है, देन माई फोकस वुड बी कि इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ABA थेरेपी एंड प्रॉबली फिजियोथेरेपी भी चाहिए क्या करके. ओके, बट द सेम थिंग ऑन माई असेसमेंट इट इज़ शोइंग कि माइल्ड ऑटिज्म है, सिर्फ सेंसरी इश्यूज एंड स्पीच डिले है उसमें, तो देन आई विल ओनली फोकस ऑन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी. सो द साइंटिफिक वे ऑफ गोइंग अराउंड इट इज़ कि पहले आप असेसमेंट कराओ, देन यू पॉइंट आउट कि कौन सा थेरेपी ज़रूरी है, एंड देन कंसिस्टेंटली वो थेरेपी कंटिन्यू करो. So anywhere where you start therapy, the child is not going to show you improvement in 1 or 2 sessions of therapy. It is at least going to take 20 to 30 sessions छोटे छोटे improvements के लिए. Okay, depending on the level of severity जो assessment में आता है, plus developmental delay, that will tell us कि कितने साल या कितने महीने therapy चलने वाला है. Okay, if you leave it midway, sometimes parents feel like अरे मैं 5 महीने से जा रहा हूँ, मुझे improvement नहीं मिल रहा है, या तो they will be like कि अरे छोटे छोटे improvements ही है, and then you stop and you don't start again. तो अगर ये बच्चे ने जो भी सीखा था थेरेपी में, there is a chance कि 50 to 60% उसमें से लॉस हो जाएगा वापस, बिकॉज उसका एक प्लेटो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था. तो वो फिर से बैक टू जीरो से शुरू करना पड़ता होगा. Yes, then you have to start therapy again, and then parents feel कि therapy तो actually काम ही नहीं करता है, but actually therapy consistent नहीं था. That's great. अगर वो प्लान, of course if parents follow the plan तो ही वो एक रिजल्ट उनके सामने दिखेगा, और because there are many parents जो consistent नहीं होते हैं, and they are like फिर हम 6 महीना जा रहे हैं फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है. They might be not following some होम प्लान्स घर पे, या समथिंग जो मिसिंग है वो नहीं कर रहे होंगे, दैट इज़ द रीज़न उन्हें इम्प्रूवमेंट्स भी नहीं दिख रहे होंगे. करेक्ट. और समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कि उन्होंने आजू बाजू में लाइक द चाइल्ड गोज टू स्कूल एवरी डे, द चाइल्ड गोज टू ट्यूशंस एवरी डे, या तो प्रॉब्ली कभी कभी वो 2 थेरेपीज लेते हैं. ओके, तो उन्होंने आगे वाले को बताया ही नहीं रहता है कि ये डायग्नोसिस है. सो फॉर एग्जाम्पल द स्कूल टीचर, बच्चा समझो नर्सरी में है, ऑटिज्म है, एंड देव नॉट इन्फॉर्म द स्कूल कि इसको ऑटिज्म है, फॉर ऑब्वियसली द फियर कि शायद स्कूल उसको निकाल देगा या ऐसा कुछ करके स्पेशल स्कूल के लिए रेकमेंड करेगा दैट वी डोंट टेक such kids, you have to shift him or her to the special right school. But ideally I have a special school of my own. But हम लोग कभी भी बच्चों को 3-4 years of age पे नहीं लेते हैं just for autism or ADHD. We will take them at 3-4 years only if we know कि genetic disorder है, या तो बहुत severe developmental delay है, कि ये बहुत gradually ही pick up करने वाला है. Okay, so when the school is not working with the child, so many a times ये बच्चा स्कूल में जाता है, एक कोने में जाके बैठ जाता है, अपने खिलौनों से खेलता रहता है, तो स्कूल ना उसको सोशली इन्वॉल्व कर रहा है, स्कूल ना उसको राइटिंग करा पा रहा है, बिकॉज स्कूल को डायग्नोसिस पता ही नहीं है.
Okay, so then it is only the parent and the therapist. So again, the process is slow. We sometimes have such good therapists. Like at our center, we work in coordination with the school, with the neurologist, with the other therapist. Suppose वो OT मेरे पास ले रहे हैं but speech कहीं और ले रहे, we still work in coordination because the team working together is the most important thing. So we even go to the extent of telling the teacher कि टीचर आप सामने से हाथ पकड़ोगे ना तो ये बच्चा नहीं ही लिखने वाला है, बट आप पीछे जाके उसका हाथ पकड़ के उसको कराओगे ना तो ये बच्चा करेगा. एंड दैट स्मॉल थिंग बट इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे. ये बच्चा स्कूल में लिखना चालू कर देता है. सो आई थिंक द key thing is it has to be a team effort, not just one or two people together. Yeah. So, according to you, what are some biggest problems or some minor problems which children are facing nowadays, like special needs children are facing nowadays? I think the first and the most important thing is acceptance. Okay, so when I work with children who are small, या तो मेरे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, okay, when I walk with them on the road, like हमारे स्कूल में ऐसे होता है every Monday and Friday we take them out for shopping or we take them to a particular place, कि अरे हम आज गार्डन जा रहे हैं या कहीं पे. I actually feel, are my children wearing clothes? Because everybody on the road is staring at them. Okay, the moment they see a Downs, the moment they see a Sturk Weber, जो थोड़ा अलग दिखता है, I don't know why people want to stare at them. Okay, I feel okay आप उनको देखो, but देखने के साथ एक smile दे दो. Probably it will go a very long way with this child that he will start socializing by looking at other people. Okay, so the most important thing is acceptance and the fear of parents because they feel कि लोग इनको accept नहीं करेंगे, so they don't tell. Even the neighbor doesn't know, that the child is facing something like this. So then the child gets homebound because उनको बताना नहीं है कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है. तो हमारे थेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर ये भी है कि बच्चा सोशलाइज करना चाहिए. सो वी विल अंडरस्टैंड कि वो सोशलाइजेशन में हमको और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. ओके, बट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इज ये घर में बंद हो जाता है. पेरेंट्स कितना एंटरटेन करेंगे उसको. सो इवेंचुअली ही गोज बैक टू द स्क्रीन या तो सॉलिटरी प्ले विच इज़ अगेन पुशिंग हिम बैक इन टू ऑटिज्म. और व्हेन द चाइल्ड इज़ हाइपर एक्टिव, उसने कभी बच्चों को देखा ही नहीं है. सो द मोमेंट ही विल सी चिल्ड्रन ही इज़ गोइंग टू गेट सो एक्साइटेड दैट द पेरेंट्स विल फील कि अरे पर ये तो हाइपर एक्टिव ही है, ये चेंज नहीं हुआ थेरेपी से. बट इज़ इट हाइपर एक्टिविटी और इज़ इट लैक ऑफ एक्सपोजर? Okay, so that's the second thing, that they don't get to socialize. And number 3, I think, is the screen. The biggest problem or the biggest thing where every parent say कि मेरा बच्चा phone, मतलब खाना खाना है तो phone देखना है, रो रहा है तो phone देखना है. Everything is that mobile phone. So, there are so many strategies for this, but I will just highlight when I started working in 2008. Okay, I used to see like 1 or 2 children with autism in my whole week of OPD. Okay, when I was in a center like KM, where the footfall is very, very, very high. Okay, now I see 1 or 2 children per day. And after COVID, I guess it increased a lot. I think after internet became so accessible and it was there at everybody's place. So I will give you a simple this thing, just in today's IPD, there was this child who's not eaten from 6 days. He has autism. He's admitted in the hospital. Not eaten for 6 days, okay, because he developed an ulcer, he had a loose motions and there are oromotor issues. So he eats only certain things. Okay, so finally now, the psychologist was called upon that this child is not eating because of probably behavior. So when I went into the OPD, okay, I just said hi. And the child looks up to me and says, "Hello, doctor, how do you do?" So the first idea which I got is this child only relates with American English. And the staff is talking in Hindi. The parents are talking in Hindi, which this child is not relating to. Okay, I use simple behavior strategies, okay, very simple behavior strategies, and the child had a bowl full of food. Okay, and then I just happened to ask the mother, that, why didn't you force feed him, or, why didn't you tell your therapist that he's admitted in the hospital and, he's not eating.
one, it didn't strike her that she needs to talk to the therapist, because she felt she needs to talk to the therapist only when she's in the center. Oh. Okay, which is again a very wrong idea. You know, you can always interact with the therapist whenever you want. And number two, she felt, what if he cries? About You know that my mother is force feeding me. oh. So this is another thing which we face with the parents today. I So think does it is. he had ulcer, or what was the So actual? the ulcer was a very small ulcer. So the hospital tried to give him bland food also, but since his stomach was bad, they couldn't give him wheat. But he wouldn't eat rice because he has sensory issues. Oh, then how did he eat, or what did he eat? So finally we asked for French fries, which also he didn't want to eat. With just simple behavior strategies, high fives, and you know, I'm so proud of you, and you know, I engaged him in play. It took me 20 minutes to feed him a bowl of rice, but the whole bowl of rice was inside. Oh, that's great. Okay, so I think children are going to cry. Okay, a child has autism. He cannot speak. If he is uncomfortable or if he wants to throw a tantrum, he's only going to cry. Of course. Okay, and every time he cries, if he gets the thing, then the child Then is he never doesn't going to have- speak. He knows that I don't have that need to speak, or you know, say my needs. मैं Yes. रोऊंगा तो मुझे मिल जाएगा. That is the only communication he has. Yes, in because his their mind. brains work like this. Autism always works. If I do A, I get B. So it is better I keep on doing A, so I will keep on getting B. Exactly. Okay, so the thing here is that children are going to cry, and it's okay. We also cried when we were small. Okay, so the children are still going to cry, but that doesn't mean that we stop pestering them to do things because they are crying. So now you have your own school and you also run an NGO. So what are some of the techniques or approaches school and other communities can do for such special needs children? Okay, so when we started the school, we started with the purpose that we are looking not only at academic, like मुझे इसे पढ़ाई नहीं सिखानी है, मुझे ये skills सिखानी है जो इनको life में जीने के लिए ज़रूरी है. Okay, so yes, academics is a part of the school, but उसके साथ you know skills जो फॉर एग्जाम्पल मुझे रोड क्रॉस करना है, मुझे चलते वक्त नीचे देख के चलना Safety है, awareness. सेफ्टी अवेयरनेस, मुझे वजन उठा के चलना है, दैट आई एम हेल्पफुल टू समबडी, मुझे वेजिटेबल कटिंग आना चाहिए, मुझे खुद के लिए कम से कम कुछ तो बनाना आना चाहिए कि यू नो इफ आई एम लेफ्ट अलोन एट होम आई विल फीड माई सेल्फ समथिंग. सपोज मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, तो एटलीस्ट घर में बैठ के क्या मैं लैपटॉप पे टाइपिंग करके दे सकता हूँ, या तो मैं चीज़ें घर में सही जगह पे रख सकता हूँ. सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम. Okay. Okay, now in the current scenarios what has happened is that जब बच्चे स्कूल जाते हैं the parents don't accept कि मेरा बच्चा 7 years का हो गया, 8 years का हो गया, तो अब इसको स्पेशल स्कूल में डाल देता हूँ. Okay, they still continue putting them in a normal school, and there is this whole new concept of shadow teachers, which I really appreciate. Okay, provided the child has the intelligence and the capability to be in that school. ओके, ट्रस्ट मी खुशी, आई सी चिल्ड्रन जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकेंड स्टैंडर्ड में है, उनको अभी तक ABCD लिखना नहीं आ रहा है, बट दे आर गोइंग विद अ शैडो टू अ नॉर्मल CBSE स्कूल और अ नॉर्मल ICSE स्कूल. So then how they write or give exams or normal, how I they have follow absolutely no idea. normal curriculum. So sometimes I just feel very bad looking at the parents because I feel therapy का burden अलग, Shadow teacher का अलग. शैडो टीचर का फाइनेंशियल बर्डन एक अलग है, एंड दे चार्ज ह्यूमंगसली. I know. Okay, then they either compromise on the therapies, okay, because they feel नॉर्मल स्कूल में तो रखना ही पड़ेगा. नॉर्मल स्कूल बोल देते कि शैडो टीचर जिस दिन नहीं आती उस दिन बच्चे को स्कूल मत भेजना. सो इवेंचुअली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज थेरेपी, जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल में रखने के लिए. ओह, तो आपके स्कूल में ऐसे कोई बच्चे हैं जो पहले मतलब ऑफ कोर्स इतनी बड़ी एज में आके बस शैडो टीचर का उनके पास ये था हेल्प, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको नहीं आता था कोई भी एकेडमिक्स हो So जाए we या have children. See, Neve doesn't say no to any child. अच्छा, अगर वो अग्रेसिव है, स्टबर्न है, मारता है, नोचता है, बिकॉज वी नो हमें उसके आजू बाजू कैसे काम करना है. एंड ट्रस्ट मी, कोई भी बच्चा आपको विदाउट रीज़न नहीं मारता है.
देर इज समथिंग जो उसको ट्रबल कर रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट कि उसको क्या ट्रबल कर रहा है. एंड इवन ही वॉन्ट बी एबल टू से कि उसको क्या ट्रबल कर. So, we had this kid who was referred, the school had removed him and the parents actually got him to our school कि अभी कोई option ही नहीं है तो इधर ही डालना पड़ेगा. तो वो ऑलरेडी ऑटिस्टिक या हाँ, he had autism and he was on medication also. Okay. But this kid comes to our school for 3 days. The 4th day, he's sitting at a place, he's following commands, he's doing things. We didn't do any magic. Okay, he was going to 3rd grade in a normal ICSE school. उसका concepts कितना था 4 letter 5 letter words and he could understand a simple sentence like I am a cat. ओके. बट स्कूल सिखा क्या रही थी, और स्कूल की कोई गलती नहीं क्योंकि उनको तो उनका करिकुलम सिखाना है. ये बच्चा शैडो के साथ बैठता था, सो ही वुड बी फोर्स्ड टू सिट इन द क्लास क्योंकि शैडो उसको बिठा के रखेगी एंड ही वुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ व्हाट इज टॉट इन द क्लास. सो जब इंग्लिश ही आई एम अ कैट पे है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कहाँ से समझने वाला है. ओके, सो ही स्टार्टेड हैविंग बिहेवियर इश्यूज क्योंकि उसको यहाँ पे बैठा के रखा था. सो ही स्टार्टेड बैंगिंग हिज लेग्स, he started going into hand flapping, or he would pick up things and he would throw them because उससे टीचर को अटेंशन मिलता था. एक टीचर के साथ ये हुआ, सेकेंड टीचर के साथ, थर्ड टीचर ने उसको क्लास में से निकाल दिया. What did the brain connect? When I throw things, I'm out of the class. Okay, so when he came to our school, he did the same thing. He tried to throw things for the first, second, third day. We did nothing with him. We only gave him gross motor activities, fine motor, and we started with 4-letter words with him. So ये स्कूल उनके लेवल पे गया. And the 4th day and till date there are no behavior issues. That's great. Okay, but therapy still needed because sensory issues है. हाँ. Okay, impulsivity है तो मुझे therapy चाहिए. But academically now he's reached grade 2 level in 1 year. Oh. Okay, because the school curriculum was simplified for him. So that is how a special school works. And special school में the children are separate. So if I have children जो बहुत hyper होते हैं या मारते हैं, okay, they are obviously for some reason, तो मैं उनके behaviors पे ज़्यादा काम करती हूँ. But if I have children जो सिर्फ inattentive है, impulsive है, तो I am working more on academics, language building skills, comprehension. Okay, so when we started this, we started seeing a lot of improvement in the children. And along with that we share everything that we do with the parents. Okay. कि हमने ये एक्टिविटी कराई है, ये वीडियो आप देखिए, हमने ये किया है, आप ये वीडियो देखिए और घर पे उसके पास कराते रहिए. So now it's becoming a joint effort. Okay, but over a period of time we understood the financial burdens are very high. So that's how to get donors, to get donations, and we could keep the schooling rates at a lower cost. That's when the NGO got formed, that we don't have to say no to anybody. So I have a watchman's son also coming to my school. I have some girl coming to my school whose father is just a Swiggy delivery guy, and the mother is a cook who goes to people's place. So I charge very minimal, but I'm very happy I'm able to do that so that I don't have to say a no to them because of the financial aspect. So the NGO majorly helps me for that. And number 2, I have these elder kids, who are 22, 23, 24. Obviously कोई उनको employ नहीं करने वाला है because उनकी इतनी skills ही नहीं है अभी तक. So we get work from them from outside. Like we get making paper bags, we get simple typing का काम, we get राखीज बनाना, we get diyas बनाना. Basic things. And whatever profits we get go to the children. Oh. So they are coming to the school but they are also earning some money out of it. So my whole thing is कि अगर वो थोड़ा और mature होते हैं जहाँ पे 16-17 years of age की समझ तक भी पहुँच जाते हैं तो we can start putting them in back office or DMart में simple जो packing guys होते हैं या तो stacking guys होते हैं, they can actually work something like this and they are not a burden. So there are already 2 children from our school who are working now somewhere else because we felt they are done and they are doing good. तो एक जो किराने का दुकान रहता है उसमें सामान आता है तो कैसे कि ब्लू कलर के सोप के साथ मुझे ब्लू कलर सोप मैच करके रखना है, ये येलो दाल को येलो दाल से मैच करके रखना है. सो ही इज़ वर्किंग देयर. Okay, there is one more it's a girl who is now working in a parlor as an assistant. Okay. कि मुझे ये क्रीम ला के दे, ये क्रीम ला के दे, and she's able to do that. So this is what my vision is
कि I don't want them to earn a lot of money, but at least to become independent, you know, where they are not a burden on anybody. So, what such techniques normal schools or communities can use, or you think they should use? One, being open. ओके, नंबर टू, यू नो, काउंसलिंग में हमसे बात करते हैं, बट वो जो बात करते हैं ना उसमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है, लाइक यू नो, एग्जाम्पल, देर इज़ अ ADHD चाइल्ड इन द क्लास हु बिकम्स इम्पल्सिव. Okay, so the moment the teacher says, you know, who wants to raise their hand, okay, and the child will raise his hand and be like, miss, me, the teacher just has to speak this one sentence extra today, that for example, Jay, how many times can we say miss? We can only say it once. Okay, tomorrow he is going to do the same thing, but the teacher has to speak one sentence extra. How many times do we say Jay? And he will understand it is one time, and gradually he will learn it, and that behavior will go away. Okay, so the schools, there are certain schools who are doing beautiful work, you know, they are inclusive of all the children that we send. There are certain schools who keep them because the government has said they have to be in the school, and then they are passed, you know, they are failed after 9th grade. They don't take them in the 9th. Okay, but then the parents have nowhere to go, and the core age of working with the child is gone. So you know, I think it is completely okay when you know कि ये बच्चा नहीं ही कोप अप कर रहा है, तो उनको रेफ़र करो कि या तो आप स्पेशल स्कूल में जाओ या तो आप इंक्लूसिव स्कूल में जाओ, बट दिस स्कूल इज़ नॉट सूटेबल फॉर योर चाइल्ड. ओके, एंड द पेरेंट्स नीड टू बी मोर एक्सेप्टिंग कि अरे मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोला है तो वो कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं. हाँ. ओके, बिकॉज पेरेंट्स फील लाइक इसको लगता है मेरा बच्चा पागल है, कि मेंटली अनस्टेबल है, कि मैं निकाल दूँ. बट वाई विल द स्कूल डू दैट? एक बच्चा जा रहा है, उसमें तो उनकी फीस ही जा रही है ना. ओके, सो दे आर प्रॉब्ली थिंकिंग फॉर योर चाइल्ड. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू बी मोर एक्सेप्टिंग एंड मोर ओपन कि ऑटिज्म है, बट ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है. देर आर सो मेनी पीपल आई सी हु आर अडल्ट्स टुडे, एंड आई एम सो श्योर ये ADHD था जब ये बच्चा था तभी, या तो ये ऑटिज्म था जब ये बच्चा था तभी. Okay, but that school never removed them because there was no knowledge. So, do you think teachers in such schools are much aware of autism, or how to treat, or how to at least handle a kid if they have a kid in their class with autism or ADHD? Yes, so that is why the government has said it is compulsory to have one counselor in the school. But trust me, most of the schools that I know, they don't listen to the counselors. The counselors are just there because government ने बोला है. There are times जब, so there are counselors who get trained under us also and go, you know, internships वगैरह करके. You know, she will actually call me sometimes and she'll tell me, मैम आज मैंने हिंदी का क्लास लिया because हिंदी के टीचर एब्सेंट है. Okay, every year we teach the interns कि जून में जब स्कूल स्टार्ट होता है, like teachers come in by 1st, 2nd of June and children come in by 10th, 12th of June. We always tell them take a class for the whole teachers, you know, कि autism क्या होता है, ADHD क्या होता है, more than the diagnosis कि अगर आपकी क्लास में ये बच्चा है तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो. ओके, बिकॉज जो डिफरेंस एक टीचर एक बच्चे की लाइफ में ला सकती है वो कोई नहीं ला सकता. I think we had wonderful teachers. That is why we are where we are. So, you know, the counselor also should get that right, you know, that she's explaining to the school and she's working around with them. Yeah, that's true. So, what made you run a NGO apart from your clinical work? Because you just now, or in earlier introduction, you said that you go to hospitals and you treat children in different hospitals. So, with this clinical work, how do you handle your NGO, and do you have a whole team, or what exactly the NGO do? So the purpose of opening the NGO was that when you do the diagnosis, okay, and you know, when they do therapies and they are still not able to cope, there should be some place where they still go and, you know, they are able to study and make their careers. So this year in the SSC board, you know, we had 2 children who were removed from schools in 8th grade saying, you know, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग फेल हो गए, ये वो करके. I evaluated them. We came to know कि dyslexia है करके. So we worked 1 year with the child. This year the child gave 10th grade with concessions जो बोर्ड देता है, but no writer. ये दोनों बच्चों ने खुद से पेपर लिखा है. Okay, one of them scored 86, one of them scored 91% in the boards. Okay,
and this tells me, you know, that this is the thing which I work with, that learning की कोई बाउंड्री नहीं है. Never. अगर आप सिखाते रहोगे और सही तरीके से सिखाओगे, ओके, तो कोई भी बच्चा, लाइक यू नो, मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनका नेक होल्डिंग भी नहीं है, तो हम उनकी नेक होल्डिंग से काम करके एक ग्लास कैसे पकड़ के रखना है, वी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर. एंड वी हैव चिल्ड्रन जो 12th ग्रेड दे रहे, 10th ग्रेड दे रहे, बट उनको उतना इंग्लिश नहीं आता है जितना दूसरे बच्चों को आएगा. सो वी ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू देयर लेवल इन अ वे दैट दे विल पास एंड गो अहेड. एंड सिंस 2016 वी हैव मल्टीपल चिल्ड्रन जो 10th दे के, देर आर पीपल जिन्होंने अपना करियर बना के दे आर सेटल्ड. लाइक यू नो, वी हैव चिल्ड्रन जो शेफ्स बने हुए हैं, वी हैव चिल्ड्रन जो अभी बारटेंडर्स है, यू नो, इन क्रूजेज एंड ऑल. वी हैव चिल्ड्रन जो फोटोग्राफी करते हैं, एनिमेशन ग्राफिक्स करते हैं, बिकॉज दे ब्रेन्स आर गुड एट दिस. So once the typical education system is out, you know, there is a lot more that these children can do. You know, there is one of my kids who's running a business of his own, and now whatever I need from my center, I buy from him. Oh. Okay, and there was a time when he was thrown out in 6th grade that he had failed all the subjects. Okay, but now with these therapeutic interventions, and now he doesn't need me also, you know, he's going to be fine in his life. Okay. Okay, so it's just adapting to the environment, to what kind of brain he has. Okay, it's not that everybody has the same brain. तो सबके brains अलग अलग होते हैं. तो अगर आप education system वैसा कर देते हो, तो there is no limit to what a child can achieve. So you have your whole team at NGO? Yes, so we have around 23 special educators. So we were only at Mira Road before. We've opened a school now in Borivali. So we have to work with a smaller ratio. Okay. For every 5 to 6 children, I need one special educator. Yeah, okay. Okay, or then we have a teacher who's done ECC ed or something, who knows how to work with special children. So they get that day in day out training from us कि अच्छा ये बच्चा ऐसा कर रहा है, ये हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, या तो ये यू नो बैंगिंग कर रहा है, तो व्हाट विल यू डू टू स्टॉप दैट. Okay. So we have ABA therapists, we have autists, we have speech therapists, we have physios. So we you have all work classes together. in NGO, or like you Classes. said, okay, only just classes. Yes. Okay. And the vocational part is a different part. So we also have like a whole full-fledged kitchen which runs. So we are trying to train the children, you know, कि आप सामान बाहर से लाओगे तो कैसे रखोगे, कौन सा फ्रिज में जाएगा, कौन से डब्बे में जाएगा, अगर वेसल्स धोए हैं तो आप वेसल्स कहाँ पे रखोगे. सो इट्स बेसिकली जस्ट द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. Oh. So that's how, so every different educator has a different function. Some will teach time, some will teach money, 2 rupees plus 2 rupees Yeah. कितना होता है. Okay, some will teach how to cook, some will teach art and craft. So there are different educators. So we here have a team of around 23 to 25 teachers. Okay, that's great. Plus the therapists. Acha, therapists and teachers are different. Yes, yes. So how many therapists do you have? We have around, I think, 8 to 10 therapists. And it is like all in Borivali, or? Mira Road and Borivali both. Acha, Mira Road and Borivali. That's great. So what vision does your NGO have? So Khushi, when you will go abroad, okay, there are these children, you know, who have vocational training setups. We have very few vocational training setups in Mumbai per se. So my vision is to open something like, you know, if the child wants to become a chef, then I give him all the culinary experience in the school itself, and then I can send him as a sous chef or a helper to work in a restaurant. Okay, or you know, these kids are very good with computers, so you know, there are people who need all this digital marketing done. Okay, but the digital marketing is obviously not a cup of tea of my children, but whatever content needs to be made for it, you know, editing, making postcards, or you know, making those banners and everything, they can definitely learn that. Okay, or yoga practitioners. Okay, or you know, parlors which are run by, you know, there are parlors which are run, but there are didis who do facials and manicures and pedicures. These children can definitely learn all of this. So our vision is to make a setup where we train them in this over here, and then we send them ahead so that they are independent in life and they have somewhere to go to. Okay, so this is what is there in abroad schools, you know, which is what we are trying to get here. So probably, I don't know, we're working on it, but I don't know how long it is going to take to develop. Or a stationery shop,
or a grocery shop, where the parents can be a part of the shop which is open for the child. Okay, and eventually the child is going to learn, with the Yes. calculators and everything. My children can multiply 5 digits into 3 digits also. Oh, Okay, but it's the calci. So when I teach them to read that, they know the money, the check filling, how do you go to a ATM and withdraw money. Okay. All this we teach in the school. So this is the vision that we have, that then we will be able to place them, because there are a lot of big companies now who are open to taking people who have mentally some difficulties, or they're intellectually disabled, or they're physically disabled. So, I had this girl who used to come to me for counseling. She had very good right side of the body, but the left side was paralyzed because she has hemiparesis right from birth. okay. She's employed in a very good company now, and she works with her right hand. Obviously, she's not going to get promoted as much as the others get promoted, but at least I feel something and some awareness is better than absolutely no awareness. Yeah, true. Right. So, how does your clinical background help you bring up strategies for the kids which you are working with? So when we study, for a major part of our studies, like nowadays, there are these very short courses available. Yeah, online. They don't do justice to, what actually needs to be done. Like, you in your center, you will have these training times, where you are explaining how the brain works, what are the functions involved, what are the parts of the brain involved. Okay, so as a clinical psychologist, I understand, which parts of the brain are involved, suppose in a behavior. Okay, so suppose if I'm looking at impulsivity and hyperactivity, I know that the dopamine in this brain is very high. That is why the child is behaving like this. So I need some neurotransmitter naturally, which is going to reduce that dopamine in the prefrontal cortex and make the child work better. Okay, so something very simple as कि मम्मा इसको नीचे खेलने भेजो. ओके, या तो मम्मा आप जब प्लस माइनस करा रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओके, डोंट डू सिटिंग एट अ प्लेस, उसको स्टेयरकेस पे ऊपर नीचे जाके करने दो. Because we all know when we do exercise, there is serotonin, oxytocin, which gets released in our body. And that is a natural inhibitor for the dopamine. And the dopamine also comes down automatically when you are exercising or when you are doing some physical activity. So this clinical background helps us to understand why these children is, are behaving in this way. There are a lot of parents who feel that, I have a child with autism, that means I know all the children with autism. But which is not the truth, because we need to understand the whole neuropsychology, the whole neurological networks which are there behind a child behaving in a particular way. Like when a doctor sees the child, he's not going to give everybody the same medicines. Yes. So that is his knowledge, and that cannot be challenged. So because we have this clinical experience, because we are working in the hospital, we understand the MRIs, the EEGs, the fMRIs. Okay, it helps us to understand and control their behaviors better, rather than just being somebody who's done a 3-month course or a 4-month course. Okay, and that's why the children listen quicker to us than the people around. So I think clinical psychology experience and internship is very, very, very important. For internship, like, of course, they need to have that practice. That is the reason they need to Yes. take internships. So our college actually took us to Thana Mental Hospital, KM Hospital. Okay, there is an institute called SPJ Sadhana Institute, Yeah. which is vocational. So we didn't go there to work, but to observe, how they work with children. Not children, they are basically adults now who have intellectual disability or they have seizures, so they can't go to work in an unprotected environment. So that exposure has taught us a lot. And I think also we were taught by our teachers that you never stop learning. So even when parents talk to me today, I always listen to them because I feel something will be there which will help me understand this child that they've got. Something new they will have, and you will have everything or something new in every child. Exactly. So that's why in the school also we always work in coordination with the therapist that they are going to, because a certain behavior the therapist will know how they are controlling in their setup, and when they tell me that, I know what to do in my setup there. Yeah.
So I think the clinical experience is very, very important. I know. So, what's one thing you wish that parents knew about how a child's brain works and develops? um, the consistency to developing the brain is कि उसको स्टिम्युलेट करो. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि अरे ये तो खुद से खाता ही नहीं है, ओके, यू हैव टू टीच हिम दैट यू नो एटलीस्ट 15, 20, 30 टाइम्स कि हमको खुद से खाना है, हमको खुद से खाना है. 31st टाइम वो अपने आप करेगा. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो APA बोलता है, जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, दैट एनी चाइल्ड जिसको कोई भी डायग्नोसिस दिया गया है, वेदर वो सेरेब्रल पॉल्सी है या ऑटिज्म है या ADHD है, उनका थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कम से कम 28 to 30 आवर्स अ वीक होना चाहिए. सो आई कांट टेक अ चाइल्ड टू थेरेपी फॉर सो लॉन्ग, बट समझो अगर मैंने 4-5 सेशंस अ वीक कराए तो मेरे 5 आवर्स हो गए. थेरेपिस्ट ने जो मुझे बोला वो मैं घर पे रिपीट करती हूँ. मैं उसको नीचे खेलने लेके जा रही हूँ. ओके, आई गिव देम एक्सपोजर टू प्रॉब्ली अ गार्डन प्ले या स्विमिंग करा रही हूँ, या तो मैंने कोई फुटबॉल या ऐसी कोई एक्टिविटी में डाला जो थेरेपिस्ट ने रेकमेंड किया है. प्लस वो सोशलाइजेशन वाला एक्टिविटी है जहाँ पे 4-5 बच्चे हैं जो ये बच्चे को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं. ऑल दिस इज थेरेपी. Okay. सो आई रियली वॉन्ट पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये करते हो विच इज़ लाइक 28 to 30 आवर्स अ वीक, विच इज़ बेसिकली लाइक 3 to 4 आवर्स अ डे, आप अपने बच्चे के साथ काम करते हो, आपका बच्चा 100% आपको इम्प्रूवमेंट दिखाने वाला है. ओके, सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, कि आपने काम करना चालू किया है तो आज मैंने बोला करके आप 7 days करोगे, फिर 8th डे कुछ तो आ गया, 9th डे कुछ तो आ गया, एंड वी डोंट वर्क. या तो आज बारिश है तो हम थेरेपी के लिए नहीं लेके जा रहे, अरे स्कूल का एग्जाम है इसलिए हम थेरेपी के लिए नहीं लेके जा रहे हैं. तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है ना, ये थेरेपी को प्रोलॉन्ग करती है. ट्रस्ट मी, इन माई प्रैक्टिस खुशी, आई हैव सीन पेरेंट्स जो ऐसे काम करते हैं. एट 2.5 years ऑफ एज मैंने ऑटिज्म डायग्नोज किया है. मैंने 4 years पे बोला है बॉस सब कुछ ख़त्म हो गया, घर जाओ आराम से, ये बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला है. और आज तक वो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी स्कूल्स में अच्छा कर रहे हैं. कोई स्केटिंग में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, ओके, कोई फुटबॉल खेल रहा है. एंड व्हेन आई लुक एट दैट चाइल्ड आई फील सो हैप्पी एंड कंटेंट टुडे, यू नो, कि हाँ, यू नो, ही इज़ डन. ऑब्वियसली थोड़ा कुछ इधर उधर तो हर बच्चे में होता है. अगर मेरी भी बच्ची है, आपके बच्चे या किसी के भी बच्चे, बिहेवियर इश्यूज सब बच्चों में होते हैं, बट वो ऑटिज्म या ADHD की वजह से अगर नहीं है तो वो बच्चा बहुत बेटर उसकी लाइफ के साथ कोप अप कर पाएगा. सो कंसिस्टेंसी, रेगुलर थेरेपी एंड फॉलोइंग अप विथ अ गुड डॉक्टर, आई थिंक दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन टू द मैक्सिमम लिमिट्स दैट जो वो पहुंच सकता है. सो मतलब ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द थेरेपिस्ट कि वो कर रही है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है घर पे. एंड दैट इज़ द थिंग आई गेस दे लैक, कि ठीक है वो थेरेपी जा रहा है तो इट्स डन, वो 2 घंटा कर रहा है वहाँ पे, फिर घर पे ठीक है अगर वो रोया, बिकॉज पेरेंट्स थिंक कि अब घर पे हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, वी हैव 10 डिफरेंट वर्क एज वेल, तो हम फ़ोन इसीलिए दे देते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वो एक फ़ोन का भी आ जाता है कि ये बहुत स्क्रीन देखता है. सो यू नो यहाँ पे बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ है खुशी. फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा विदाउट स्क्रीन खाता नहीं है. ओके, दीज चिल्ड्रन लव वाटर. आप एक बकेट ऑफ वाटर लो, उसमें टॉयज डालो, ये बच्चा वो पानी से खेलते खेलते कब खा लेगा आपको पता नहीं चलेगा. ऑटिज्म चिल्ड्रन वर्क ब्यूटिफुली ऑन काउंट्स. आप उनके मुंह में खाना डालो, आप ये करो कि हम चूई 5 तक करेंगे, चूई 1, चूई 2, चूई 3, 5 तक जाओ, वो बच्चा 100% सुन के करेगा. बट अगर मैं ऐसे करूंगी ना, चल चला मुझे लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी खाना खाने बैठ, फिर हमको निकलना है, ये जो साउंड है ना उसने ही वो बच्चे को हाइपर कर दिया. तो उसके बाद वो बच्चा एक ही वर्ड बोलेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा. ओके, क्योंकि वो बच्चे को कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है ही नहीं. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको प्रिपेयर करो कि बाबू 5 minutes है, फिर मम्मा खाना ला रही है, हम खाना खाने वाले हैं. ओके, बाबू 1 minute, मम्मा का चपाती बन गया, आज हम क्या खाएंगे, चपाती भाजी, गिव मी हाई फाइव. ही इज गोइंग टू लिसन टू यू. ट्रस्ट मी, आई हैव 120 चिल्ड्रन इन द स्कूल टुगेदर. हम लोग चिल्लाते नहीं है, क्योंकि अगर हम चिल्लाते रहेंगे ना तो हम सबको बीपी आ जाएगा. ओके, वी आर जस्ट फर्म, वी आर कंसिस्टेंट,
एंड उनको पता है कि ये मुझे छोड़ने नहीं वाली है जब तक मेरा ये टास्क फिनिश नहीं होगा. सो अगर पेरेंट्स ये 7 days के लिए भी करेंगे ना, द 8th day द चाइल्ड इज गोइंग टू फॉलो देम. सो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है, बट हम बच्चे इसीलिए दुनिया में लाते क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं. तो अगर इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको ऑटिज्म आया इसलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है. अगर आपका सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चा भी रहता था तो भी आपको उसके साथ 2 घंटा बैठना ही पड़ता था. सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू आर जस्ट थिंकिंग इट इज एक्स्ट्रा. Yeah, And that is why it is becoming a burden on you. yeah, that's true. So if you don't think it is extra and you just do it, the solution is right there. Absolutely.